प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एटोबिकॉक च गो रेल फैसिलिटी का दौरा किया तो इस पोस्ट बजट टूर दौरान PM ट्रूडो ने ट्रांजिट फंड दौरान अधीन गो रीजनल एक्सप्रैस रेल ਲਈ $1.8 बिलियन निवेश का ऐलान किया। इस तो अलावा 300 एडिशनल प्रोजेक्ट्स भी अप्रूव किए गए हैं। जिक्र हो गया कि कनेडा सरकार वालों ट्रांजिट विच की गई है हुण तक की सब तो वड्डी सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पोस्ट बजट टूर दौरान एटोबिकॉक की गो रेल फैसिलिटी नूं विजिट किया। इस मौके प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने ग्रेटर गोल्डन हॉर्स शू एरिया दे विच रीजनल एक्सप्रैस रेल ਲਈ न्यू बिल्डिंग फंड विचों $1.8 बिलियन खर्चण का ऐलान किया। इस दौरान फाइनेंस मिनिस्टर बिल मॉर्न्यू और इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर अमरजीत सोही भी मौजूद सन। Budget 2017 continues to make investments to help build stronger communities for folks here in the GTA and across Canada. So today, I'm happy to announce that our government will be investing more than $1.8 billion in the GO Regional Express Rail Network. Along with the province's contribution, this investment through the new Building Canada Fund will be the single largest transit project in which the federal government has ever invested in. These funds will help improve the lives of millions of Ontarians by making sure that students make it on time to their first job interview, that parents make it home early to help their kids with their homework, and that families enjoy what their community has to offer whenever they want. इस अनाउंसमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ GTA ਤੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ $1.9 ਬਿਲੀਅਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵਾਂ ट्रैक तैयार करना है इन्होंने तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ कि इस समय ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। सरकार वालों पब्लिक ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अधीन ओंटारियो विच 300 एडिशनल प्रोजेक्ट्स नूं भी मंजूरी दी गई है। ओंटारियो प्रीमियर कैथलीन विंसर ने ब्रैम्पटन और मिसिसागा मेयर वालों इस निवेश का स्वागत करदियां खुशी प्रगट की गई। With our federal partner contributing $1.9 billion towards, well, I'm saying 1.9. The Prime Minister said over 1.8. The truth is in there. It is approaching $1.9 billion. Towards the $13.5 billion Ontario has allocated towards GO RER, the province now has the fiscal capacity to invest even more in the other priority transit projects throughout the region. This is about building a thriving region so that the Greater Toronto Hamilton area and surrounding communities can continue to be not only a great place to live, but the economic engine of our country. This federal contribution of roughly $1.9 billion will help a great deal. It's going to make life easier for people who commute in this region. It's going to help with our economy. It's going to help us fight climate change. Today really is a fantastic good news announcement from the federal government to help support the work that Premier Kathleen Wynne and the Ontario Liberals are already doing. This is something I've been talking about since I got elected, and to have two levels of government working together is going to provide better transit, more reliability, and regular traffic to and from our city. And this is a part of our innovation hub. This is about getting business in and around Brampton and wanting to relocate, to grow their business, to see Brampton as being a more attractive place to do business. So this is a great announcement. I am committed, as is our Premier, as is our Prime Minister, to investing in transit and in particular in regional express rail. RER is so important for us. It's one of our key asks to help build that missing link and how to improve transit on all our GO lines. So this is one more investment that gets people moving, gets people out of their cars, which is good for the environment, helps reduce gridlock and congestion, gets people to work, get to their appointments. And so this is a great announcement. I'm so delighted we have 3 levels of government that are committed to investing in transit. इस निवेश राही फेडरल सरकार वालों पहली बार ट्रांजिट प्रोजेक्ट दे विच सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट की गई है।
ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਲਈ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲ ਪੇਇੰਗ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਲੀਨ ਕਾਲਰਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਈਟੋਬੀਕੋਕ, ਕੈਨੇਡਾ।